हेलो एवरीवन, माय नेम इज पंकज अग्रवाल। इस लेक्चर्स में हम बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि कैसे उसको अप्लाई किया जा सकता है आईओक्यूएम की तैयारी के लिए। आज हमने क्वेश्चन देखा है प्राइम नंबर्स पे। प्राइम नंबर्स पी क्यू आर गिवन है और हमारे पास एक इक्वेशन है। देयर आर थ्री वेरिएबल्स एंड ओनली वन इक्वेशन। सो हाउ कैन वी फाइंड पी क्यू आर यूजिंग सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वो देखते हैं। देखिए हम लोग ने क्या किया, वहां पे Q माइनस आर है, राइट हैंड साइड में सिर्फ Q और R है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं P इंटू क्यू माइनस आर इज इक्वल टू क्यू माइनस आर प्लस 2R। सम ऑफ यू माइट बी वंडरिंग कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। से द बेसिक पर्पस इज आई कैन टेक Q माइनस आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब 2R जो है 2 इज प्राइम, R इज प्राइम, सो इस नंबर के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं 1, 2, R, 2R। ऑब्वियसली P माइनस 1 इज ए पॉजिटिव इंटीजर, Q माइनस R इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो ये दोनों क्या होंगे फैक्टर्स ऑफ 2R, मतलब कि P माइनस 1 विल बी अमॉन्ग्स दिस, Q माइनस R विल बी अमॉन्ग्स दिस। नाउ एक और लॉजिक लगा रहे हैं, Q minus R cannot be R or 2R. Why? Because अगर ऐसा होता है तो Q will become 2R or 3R. But this is not possible because one prime number cannot be an integral multiple of another prime number. That means हमारे पास अब खाली दो ही ऑप्शन रहते हैं, Q minus R का वैल्यू या तो 1 होगा या 2 होगा। Let's see to that. So, what do we get? We are getting two cases. Either first case P minus 1 is Q minus R is 1, so accordingly P minus 1 will be 2R, or the second case. What is the second case? Second case is Q minus R. So, what must be P minus 1? P minus 1 must be R. Now, first we try to solve the first case. Now, in this case, just have a look. Q minus R equal to 1. That means either Q is odd, R is even, or vice versa. That means one of them is 2 because 2 is the only even prime number. So, obviously Q cannot be 2, so R must be 2. If R is 2, Q must be 3. So here if I put, what do I get? P equal to 1 plus 2 into 2, which is 5. We are asked P plus Q plus R. P plus Q plus R is 10 in this case. Is this part clear? We are clear with the first part. Now we are looking into the second part. What is the second part? P minus 1 must be R, Q minus R must be 2. So let's look into the second case. Q minus R is 2. Now obviously, if P minus 1 is R, we can use the same logic that P and R are of opposite parity. That means either P is 2, but if P is 2, R must be 1, which is not possible, so R must be 2. If R is 2, P must be 3. But if R is 2, we get Q is equal to 4. But in the question it is given that P, Q, R are prime numbers and 4 is not a prime number, so this case is not possible. So the only case possible is the first case, in which we get P plus Q plus R is 10. Now, you see that we are using very basic concepts to solve the questions, and I'm giving you a similar question on prime numbers. There is one equation and two variables, P and Q. So obviously, use some similar logic and try to solve this. Thank you.